हे नमस्ते दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रही है। स्वागत है मेरे चैनल पर। सारे चैनल सब्सक्राइब और हमारे चैनल आने वाला नया सब्सक्राइबर का। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को तो यही है, ले उसके बाद लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। चलो तो आइए देखिए कैसे इसको किया जाता है। लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक मान लो, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर ओ डैश, दिस इज ऑब्जर्वर ओ। पहले बार ये फिगर का समझ लो, ये है एस फ्रेम, ये है एस डैश फ्रेम्स। हियर एस मीन्स रेस्ट फ्रेम्स, दिस इज एस डैश इज अ मूविंग फ्रेम। एस मीन्स रेस्ट फ्रेम्स, rest, and S dash is moving frame. Here we have to introduce new transformation equations with the new concept of invariance of light in free space. This transformation is known as the Lorentz transformation. So consider two observer O and O dash in S frame of reference and S dash frame of reference, where S dash frame is moving with the velocity v along x-axis. The distance covered by the moving frame of reference relative to rest frame of reference is Bt. यहाँ पर है शुरू पर initial phase is O and O observer is moving a distance x, ठीक है, moving a distance x with the velocity v along the positive x direction. So suppose we make measure of time from the instant with the origin of s and s dash just coincide at t equal to 0. If t equal to 0, then the two frame of reference having origin, I mean of two observer are coincide with each other. Let's talk about the Lorentz transformation. So here O is the observer at S frame of reference, at S frame, and O dash is a also observer at S dash frame. चलिए इसके ऊपर इसका डेरिवेशंस, इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या होती है, इन्हें समझने के लिए पहले एक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होती है। वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन विच इज जस्ट करेक्शन द x dash in Galilean transformation is x dash equal to x minus bt, just only. There is no any coefficient, but Lorentz transformations put the coefficient gamma. This is known as the Lorentz coefficients. And in 19th century, the physics community has two phenomena. One is a Newtonian phenomenon and another is a Maxwell electromagnetic theory. In Newtonian assume the all inertial frame were equivalent and the any frame moving at speed with constant with respect to the inertial frames कहा जाती है। शुरू करती है इसका डेरिवेशन पर। डेरिवेशन कैसे डिराइव करना चाह रही है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, वो डिस्टेंस कहाँ तक पहुँचेंगे, डिस्टेंस x कवर है with the velocity v, that's why the distance is vt, and the equation can be is x dash equal to k x minus bt, where k is the constant. That's why sometimes the reason for trying the above relation, that means this relations कैसे ड्राइव करेगी। देखो मैं कुछ कंसीडर
टू ऑब्जर्वर, ठीक है, O and O dash in system S and S dash prime, where S dash is moving with the velocity v, where S dash is moving with the velocity v, S dash moving with velocity v along the x directions, along the x axis, ठीक है. Suppose we make measurement of time from the origin of S and S dash. Suppose we make measurement of time from the origin of S dash and S. The origin per, that is origin per S and S dash means t equal to 0 when observer O and O dash coincide, ठीक है. At t equal to 0 both observer are coincide. Suppose the light is emitted, suppose light is emitted when O and O dash coincide. Then after time t, इतना टाइम 0 होने के बाद क्या होती है, देखिए आफ्टर टाइम t पर कैसे होगा. आफ्टर टाइम t the observer O will note that he has reached at point P. The observer reached at point P, which is shown in figure. From him, I mean the observer, the equation will be x square plus y square plus z square equal to r square. यहाँ पर है, ये एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पर मान लीजिए ये r है, ठीक है, ये r है, तो r इक्वल टू इसका वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट c एंड डिस्टेंस टाइम, दैट्स वाई r स्क्वायर, ठीक है. उसके बाद एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू c square t square equation 1. Similarly, this is observer O at point P. Then observer at O dash observer is at point P. Similarly, observer O dash reach at point P with the same velocity c, then the relative distance r dash equal to the same velocity t but time is varies. ठीक है, तो ये मान लीजिए इक्वेशन 2. ठीक है, यहाँ पर ये है आर स्क्वायर आर डैश का स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वेशन 2a. Now both equations are equal, must be equal, since both observers are at the center of the same expanding wavefront. क्योंकि both observers are at the center, that's why these two equations must be equal. Then equating these two equations, z square
minus c square t square equal to x square plus x dash y dash plus z dash square minus c square t square. You know, also look at here, from this figure the observer is moving toward the x-axis, so the velocity along the y-axis should be 0 and the velocity along the z-axis should be 0. That's why you can put there is no motion on the x and y axis, so there is no necessary for writing dash or prime in y and z. Then x square equal to, thoda se, there is no motion along x axis पर the motion है y and z axis, so x dash equal y dash equal to y and z dash equal to z. Then the equations, this is equation 3, is modified as x square minus c square t square equal to x dash square minus c square t dash square. This is equation 4. क्योंकि x dash is y dash equal to y, that's why y cancels, then remaining term is this. The transformation equations, आइए देखिए the transformation equation. The transformation equation relating x and x dash is क्या है, x dash equal to k x minus bt. ये Galilean transformation equation दी थी, ठीक है, where k is not in Galilean transformation, he put the some constant k to find the values of k, then the modified equation should be find out. We need to find the value of k. I give some reason for trying to above relation. In Galilean transformation must be reduced for the low speeds. Galilean transformation reduce the for low speeds. That's why some reason trying to above relation, that's the transformation must be reduced to Galilean transformation for low speed if v is very less than the speed of light. Similarly, let us assume t dash equal to a t minus bx, where a and b are the constants, ठीक है, where a and b are the constant. मान लीजिए e है इक्वेशन 6, तो देखिए substituting the values of x dash and t dash in equation 4. यहाँ पर x dash है, यहाँ पर t dash है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इक्वेशन है, दैट इज x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर माइनस ट्वाइस k स्क्वायर v माइनस c स्क्वायर a स्क्वायर b xt माइनस a स्क्वायर minus k square b square divided by c square t square. This is equation 7. Equation 7, so equation 5 and 6 are using in equation 4, and solving you can get this equation. I write here directly, I have no time to solving here. Then equating the coefficient of each terms, x square terms and c square t square terms, equating coefficient of x square and t square c square, then we get the
k square minus c square b square a square equal to 1, मान लीजिए it is equation h, and k square b minus c square a square b equal to 0, क्योंकि यहाँ पर xt is not there, so the coefficient of xt should be 0. This is 9, and another is a c square t square, इसका coefficient क्या है, a square minus k square b square by c square equal to 1. ठीक है, तो सॉल्विंग करो ये 3 इक्वेशन सॉल्व करके the values of k a b you can find here. Find the values of k and a and b to ये 3 सॉल्विंग इक्वेशन करो तो हम k equal to 1 by 1 minus b square by c square a, which is equal to also values of a, and the values of b equal to b square by c square. मानो इक्वेशन 12 इक्वेशन 11. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करो the values of k a and b. You are substituting here k a, substituting here values of k is substituting here. You can find the x transformation, and a and b you can put the time transformation. Lorentz also just modified the x and t in the Galilean transformation. In the Galilean transformation, then you can substituting these values of 11 and 12 are using in 5 and 6 equations. In 5 and 6 equation, then x dash will be x minus bt divided by root under 1 minus b square by c square आती है, और उसके बाद t dash equal to t minus b by c square times x divided by 1 minus root under 1 minus b square by c square. Therefore, the Lorentz transformation are, these two equations are modified in Lorentz transformation. It is just easy क्योंकि both equation at after time t or is at point p, then equation will be this, where r equal to ct, क्योंकि r कितना distance पर है उसका velocity c square, and at time t it is a rest frame of reference, it is a moving frame of reference. moving frame of reference पर time change होती है, उसके बाद x y z पर change होती है, उसके लिए हम पर यहाँ पर dash. ठीक है, there is no motion along the y and z axis, so the x square equal to y square equal to, that means y means y prime, z means z prime, then equation will reduces this, the transformation equation becomes this. सपोज मान लीजिए यहाँ पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होती है, क्या है, रिड्यूस फॉर्म है, तो फॉर इट इज ओनली फॉर लो स्पीड. मानो ये एकदम वेलोसिटी इज very very less than c, then you can assume this condition, these two assumption, then equating coefficient, then you can find the values of k a and b and put the values of this, then you can find the Galilean transformations. No, I means sorry, it is a Lorentz transformations. ठीक है, तो Lorentz transformation क्या है, x dash equal to x dash minus b dash t dash divided by x equal to x minus bt divided by 1 minus b square by c square, एक इक्वेशन है लोरेंस का, और दूसरी y इक्वल टू y एंड z डैश इक्वल टू z, दूसरा ये तीसरा, एंड द टाइम इज डिफरेंस, सो टाइम t minus b by c square times x divided by root under 1 minus b square by c square. This is equation 4. ये 4 इक्वेशन कहती है गैलीलियन लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. इसका इनवर्स क्या है देखिए, इसका इनवर्स भी है, इनवर्स पर कहीं नहीं, इनवर्स पर सिर्फ एक्स डैश पर एक्स है एंड प्लस के पर माइनस साइन है. ठीक है, तो एक्स इक्वल टू एक्स डैश माइनस बी टी डिवाइड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ऊपर रूट. दिस इज ए इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन. वाई डैश इक्वल टू वाई, देयर इज नो मोशन, एंड जेड डैश equal to z, there is no motion, and t equals to t dash plus b dash by c square, b dash 9 x dash divided by
1 minus b square by c square, equation 5, 6, 7, 8. Here 1, 2, 3, 4 equations are Lorentz equations, and these 5, 6, 7 equations are the inverse Lorentz transformation. These equations convert the measurement measure in the frame S dash into those in the frame S. Thank you, students. Also, we can reduce the Galilean Lorentz transformation into the Galilean transformation when the velocity of moving frame is very less than the velocity of light. That's why the B by C tends to 0. Therefore, 1 by 1 minus v square by c square equal to 1. That's, put the values of this is equal to 1. You can get x dash equal to x minus vt, y dash equal to y, z dash equal to z, and t equal to t. This is in the Galilean transformation. This is the for the very low speeds. If the moving frame is very low, then you can reduce the Lorentz transformation into the Galilean transformation. If the speed is high, then Galilean into the Lorentz transformation. ये Lorentz transformation का derivation. ठीक है, लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन पर इतने थोड़ा से बात है। ये बात ये यहाँ पर पॉइंट पी है, इसका मान लीजिए इट इज अ डिस्टेंस आर पर है, ई है एक्स डैश वाई डैश, इट इज एक्स डैश एंड इट इज ए जेड डैश। ठीक है, इसका रिलेटिव सम था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, आर इक्वल टू सी टी, आई मीन आर इज द डिस्टेंस ओ टू पी, ओ टू पी तक ई कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसके डिस्टेंस है सी टी. यू कैन पुट द सी टी. हियर इज ए मूविंग रेफरेंस, सो यू कैन पुट द सी डैश. हियर इज नॉट अ, हियर इज ऑल्सो यू कैन construct point P. This is R equal to CT. Thank you. Thank you for watching my video. Please do not forget like, comment, subscribe. Thank you. All the best.